Next question. Next question is, I have to give an example of a relation which is symmetric but neither reflexive nor transitive. Now, coming to the first part, ऐसा रिलेशन चाहिए जो सिमेट्रिक हो बट रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए, ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए. Now, if I define the relation in set A, where A is 1 2 containing elements 1 2 3, और मैं रिलेशन सेट में ऐसा रख दूं कि 1 2 belongs to relation set, तो to make this relation symmetric मुझे 2 1 डालना ही पड़ेगा. I have to add 2 1 to this relation set. So आप देख रहे हैं बड़ा सिंपल सा है. 1 2 is belonging to R, so 2 1 is also belonging to R. ना तो ये रिफ्लेक्सिव है ना ही ट्रांजिटिव है, बिकॉज इसमें 1 1 2 2 3 3 बिलोंग नहीं कर रहा, रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है. और ए बी बी सी बिलोंग कर रहा है तो ए सी बिलोंग नहीं कर रहा. सो दिस रिलेशन इज symmetric but not reflexive and not transitive. रिफ्लेक्सिव भी नहीं है और ट्रांजिटिव भी नहीं है. सेकेंड पार्ट, ऐसा रिलेशन, आई हैव टू लुक फॉर दैट रिलेशन which is transitive but neither reflexive nor symmetric. जो ट्रांजिटिव है लेकिन ना तो रिफ्लेक्सिव है ना ही सिमेट्रिक है. नाउ अगेन आई एम डिफाइनिंग इन सेट A which contains 1 2 3. So I have to make this relation transitive, ना तो रिफ्लेक्सिव चाहिए ना सिमेट्रिक चाहिए. बड़ा सिंपल सा लिख लेते हैं. Only 1 2 ordered pair is present here. Now this is one of the MCQs in your NCERT as well, कि कैसे ये ट्रांजिटिव है. देखिए रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि 1 1 2 2 3 3 आर को बिलोंग नहीं कर रहा. सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि 1 2 आर को बिलोंग कर रहा है लेकिन 2 1 आर को बिलोंग नहीं कर रहा. सो दैट्स वाई इट इज नॉट सिमेट्रिक. लेकिन ट्रांजिटिव इसलिए है बिकॉज ए बी इज बिलोंगिंग टू आर. ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी तो है ही नहीं, तो हाउ शुड वी लुक फॉर ए सी. जब बी सी है ही नहीं तो ए सी के लिए क्यों देखना. सो दैट्स वाई दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव बिकॉज ओनली ए बी इज बिलोंगिंग टू आर. तो ये तो अपनी कंडीशन फुलफिल कर रहा है. So this is a very simple set which is transitive but neither reflexive nor symmetric. But you can take another example also. Here relation is defined such a way that A B, where A is less than B and both A B belongs to real number. हमारा रियल नंबर टू रियल नंबर रिलेशन है. ये रिलेशन भी ट्रांजिटिव है, ना तो सिमेट्रिक है ना रिफ्लेक्सिव है. बिकॉज रिफ्लेक्सिव इसलिए नहीं है क्योंकि A इज क्लियरली इक्वल टू A. लेस देन की तो बात आती ही नहीं है, तो वो रिलेशन सेट में बिलोंग नहीं करेगा. और ये सिमेट्रिक इसलिए नहीं है क्योंकि if AB belongs to R, that is A is less than B, ये given है, so B cannot be less than A. B has to be greater than A, तभी given condition true रहेगी. So B A will not belong to R. B A R को belong नहीं करेगा, तो तभी ये सिमेट्रिक नहीं है. बट ट्रांजिटिव होता है क्योंकि अगर A ट्रांजिटिव इसलिए है बिकॉज if A is less than B,
means AB belongs to R. B is less than C, BC also belongs to R. रिलेशन सेट को है. और क्लियरली अगर ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी विल ऑल्सो बिलोंग टू आर. आर को बिलोंग करेगा. ए सी विल ऑल्सो बिलोंग टू आर, रिलेशन सेट को बिलोंग करेगा. सो ए सी मेक्स दिस रिलेशन ट्रांजिटिव, बट this is not neither reflexive nor symmetric. Now coming to the next third part, reflexive and symmetric but not transitive. ऐसा relation जो reflexive and symmetric है but transitive नहीं है. Third part, I have to look for a relation which is reflexive and symmetric but it is not transitive. Now let us define the relation in set A. To make this relation reflexive बनाने के लिए इस relation में I will have to take 1 1, 2 2, 3 3 लेना पड़ेगा. और I can take, if I want to add 1 2, clearly symmetric बनाने के लिए मुझे 2 1 भी लेना पड़ेगा. अगर मैं इसमें 2 3 भी ऐड कर दूं तो क्लियरली मुझे 3 2 भी लेना पड़ेगा. एंड आई विल स्टॉप हेयर. सो ऑब्वियसली ये रिफ्लेक्सिव तो है बिकॉज तीनों सेम 1 1 2 2 3 3 अपने आप से रिलेशन है उनका. इफ 1 2 इज प्रेजेंट इन द आर, 2 1 इज ऑल्सो देयर. 2 3 is present in the R relation set, 3 2 is also there. How this relation is not transitive? Because here 1 2 is belonging to R, 2 3 is belonging to R, but here AC is 1 3. 1 3 doesn't belong to R. R को belong ही नहीं कर रहा है 1 3. So this relation is reflexive and symmetric but not transitive. Now coming to next relation, I have to find out reflexive and transitive relation but not symmetric. मुझे reflexive ढूंढना है और transitive ढूंढना है but symmetric नहीं होना चाहिए. If I take a relation R4, AB ले लेते हैं, where A is less than equal to B. सिर्फ ट्रांजिटिव बनाना था तभी मैंने उसे उस टाइम ऐसे रखा था. रिफ्लेक्सिव नहीं बनाना था in second case. But in this case, in fourth relation, I have to make reflexive and transitive but not symmetric. So I'm adding this less than equal to sign here, where AB belongs to real number. A and B both are real numbers. So clearly real number to real number relation है. Now how this is reflexive? A is equal to A because less than equal to sign है. AA के लिए चेक कर रहे हैं. So clearly AA will belong to R. कोई भी रियल नंबर देख लो वो अपने आप से इक्वल होगा. So that's why this relation is reflexive. तभी ये relation reflexive है. Now coming to next, सिमेट्रिक कैसे नहीं है? क्लियरली अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा मीन्स ए हैज टू बी लेस देन इक्वल टू आर. ये गिवन है. लेस देन इक्वल टू बी, दिस थिंग इज गिवन. अगर मैं
ये कह दूं कि B is less than equal to A, this is going to be the false statement because ये contradiction हो जाएगी. जब उसने बोल दिया B has to be greater than equal to A, तो तभी रिलेशन सेट में आएगा. तो ये कैसे, ये दिस इज नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल. So clearly BA will not belong to R. So that's why this is not symmetric. But ये obvious reasons के कारण transitive होगा. This relation is going to be transitive. कैसे? AB R को belong कर रहा, means A is less than equal to B. ये given है. BC is also belonging to R, means B is less than equal to C. This is also given. तभी वो relation set को belong करेंगे. So A is less than equal to B is less than equal to C. Clearly A is less than equal to C. AC will also belong to relation set. That's why this relation is transitive. ये relation transitive होगा. Now we have to look for a relation which is symmetric and transitive but not reflexive. बड़ा simple सा relation ले लेते हैं अब इसमें. Let us again define the relation in set A, and we'll keep the set A very simple. 1, 2, 3. Relation is defined in set A, which is containing elements 1, 2, 3. अब मुझे ऐसा रिलेशन बनाना है जो सिमेट्रिक होना चाहिए, ट्रांजिटिव होना चाहिए और रिफ्लेक्सिव नहीं होना चाहिए. सो सिमेट्रिक कैसे होगा? एक सिंपल सा 1, 2 ले लेते हैं. तो सिमेट्रिक बनाने के लिए 2, 1 होना चाहिए. ट्रांजिटिव बनाने के लिए ए बी बिलोंगिंग टू आर, बी सी बिलोंगिंग टू आर, ए सी शुड ऑल्सो बिलोंग टू आर. लेट अस स्टॉप हेयर. सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, बट रिफ्लेक्सिव नहीं है, बिकॉज क्लियरली 1, 1 तो आर को बिलोंग कर रहा है, but 2, 2 is not belonging to R. 3, 3 is not belonging to R. इनको R को belong ही नहीं कर रहा है. 2, 2 भी और 3, 3 भी R को belong नहीं कर रहा है. That's why this relation is symmetric and transitive but not reflexive. Coming to next question. Show that the relation in set A of points in a plane given by R is equal to PQ, distance of a point from origin P is same as the distance of point Q from origin, is an equivalence. अब हमारा relation set वो relation set है, उसमें P और Q ऐसे points आएंगे जिनमें distance of P from origin will be distance equal to distance of Q from origin. Abhi we are going to do the first part. Now I want to check whether the relation is reflexive or not. Case 1, reflexive. Reflexive क्या कहता है? If AA belongs to R, then only relation is reflexive. AA R को belong करेगा तभी relation reflexive होता है. Now, in this case, let me check PP. Obviously, distance of P from origin will be equal to distance of P from origin. ये distance बदलने तो वाला नहीं है. So PP will belong to R.
PP R को belong करेगा. That's why this relation is reflexive. ये relation reflexive है क्योंकि PP clearly R को belong करेगा. Now, case 2, I want to check whether the relation is symmetric. Now, if AB belongs to R, AB R को belong करेगा, then BA should also belong to R. BA R को belong करना चाहिए. AB R को belong कर रहा है तो BA should also belong to R. If I take the case of PQ belonging to R, means distance of P will be equal to distance of Q from origin. तभी R सेट में आएंगे ना, तभी ये R सेट में आएंगे ना. Now, obviously ये distance तो सेम ही रहेगा क्योंकि Q और P भी R को belong कर सकते हैं क्योंकि distance of Q will be equal to distance of P. So QP will also belong to R. ये change तो नहीं होने वाला है. So that's why this relation is symmetric. Now, if case 3, I want to check whether the relation is transitive or not. ये relation transitive है या नहीं. Transitive क्या कहता है? If AB belongs to R and BC belongs to R, BC R को belong कर रहा है, तो AC should also belong to R. हमको ये ढूंढना है. Now, given is that PQ belongs to R. मतलब कि distance of P will be equal to distance of Q. Distance of P will be equal to distance of Q. Now, QR belongs to R. QR भी relation set को belong कर रहा है. That is, distance of Q from origin, ये सारे distances origin से हैं. From origin will be equal to distance of R. From origin तभी relation set को belong करेगा. I will take, यहाँ पे R नहीं लेते हैं, यहाँ आप X ले लीजिए या कोई और ले लीजिए because clearly from origin. So from 1 and 2, can we say that 1 और 2 से हम ये 1 और 2 equality से can we say that distance of P will be equal to distance of X from origin? So Px will belong to R. Px R को belong करेगा. That's why this relation is transitive. ये transitive है. और because this relation is reflexive, symmetric and transitive, that's why they are this relation is equivalence relation. Now, I have to do second part of the question. Further show that all the points related to point P is the circle passing through P with the origin as the center. मुझे अब रिलेशन सेट में दिखाना है कि अगर मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाऊं x, अगर मुझे ओरिजिन से
मेरा डिस्टेंस p का यहाँ पे है 5 यूनिट्स है. लेट अस सपोज दिस इज 5 यूनिट्स. So origin से all those points which are at the equal distance of 5 units will come in the relation set. सारे जो 5 units के डिस्टेंस पे हैं origin से, वो सभी इस रिलेशन सेट में आएंगे. p का रिलेशन यहाँ पे x, y, a, b, c सबसे हो जाएगा उन all those points पे. These all points will be lying on a circle whose center is going to be the origin. ये सारे points अगर हम connect कर दें, because they are going to be infinite points, इन सब points को अगर हम connect कर दें, it is going to be a circle with center origin, with the center as origin as the center. So our relation set was distance of p from origin will be equal to distance of q from origin. रिलेशन सेट में वही आएंगे, वही ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे जिसमें डिस्टेंस ऑफ p फ्रॉम ऑरिजिन will be equal to distance of q from origin. Now let us suppose that distance of p from origin is equal to r units. r units है, ये रेडियस r units है origin से p का distance. Now if I take another point, so px clearly will belong to relation set. Similarly, if I take another point py, where py will also belong to r, so there are infinite points to which p gets related. And if we join these points, they form a circle. They form a circle with origin as the center. Clear? Now this is the second part show that all the set of the set of all points related to point p is the circle passing through p with origin as the center. Now coming to next question. Show that the relation defined in the set A of the triangles as T1, T2, where T1 is similar to T2 is equivalence relation. Very easy question. Now, पहले case 1 equivalence के लिए I have to check for reflexive. क्या कहता है? If AA belongs to R, then relation is reflexive. Now T1 will always be similar to T1. T1 से हमेशा similar होगा ही होगा.
तो हर ट्राइंगल अपने आप से सिमिलर होता ही होता है, तो T1 will belong to will belong to R, T1 will belong to R. So that's why relation set, this relation is reflexive. Case 2, I want to check whether the relation is symmetric or not. If AB R को belong कर रहा है, then BA should also belong to R. BA भी R को belong करना चाहिए to make the relation symmetric. Now, given is that T1, T2 belongs to R. That is, T1 is similar to T2. That is given. अगर T1 T2 के similar है, clearly T2 भी T1 के similar होगा. T2 triangle is also going to be similar to T1. So T2 T1 will also belong to R. So relation is symmetric. Relation symmetric है. Coming to next case, transitive. If AB belongs to R, BC belongs to R, so AC should also belong to R. AC R को belong करना चाहिए. AC R को belong करना चाहिए. अगर AB R को belong कर रहा है, BC R को belong कर रहा है, AC R को belong करना चाहिए. Now T1 T2 R को belong कर रहे हैं, given है. So T1 is similar to T2. T2 T3 R को belong कर रहे हैं. मतलब कि T2 is similar to T3. T2 T3 के similar है. Clearly अगर T1 T2 के similar है, T2 T3 के similar है, so T1 will be similar to T3. So T1 T3 will also belong to R. So this relation is transitive. ये relation transitive है. That's why this is equivalence relation. Reflexive, symmetric and transitive relation is equivalence relation. Now, coming to the second part of the question, consider 3 right angle triangles with side 3, 4, 5. अभी हमारे पास triangle 1 है जिसमें sides 3, 4, 5 हैं. I have triangle 1 having sides 3, 4, 5. Triangle 2 with sides 5, 12 and 13. Triangle 3, 6, 8, 10. Now, I have to find among T1, T2 and T3 which triangles are related. Means relation set में वही triangles आते हैं which are similar to each other. Now similarity we have done in class 10. Those triangles are similar where the ratio of sides is constant. They have the same ratio. Here
The ratio is 1/2, 3/6, 4/8, 5/10, 1/2. The sides are proportional. That's why T1 is similar to T3. T1, T3 will belong to relation set. They are related to each other. क्लियरली T2 का किसी के साथ भी प्रोपोर्शन नहीं बन रहा है. T2 की साइड्स का किसी भी ट्राइंगल के साथ प्रोपोर्शन नहीं बन रहा, तो T2 का रिलेशन नहीं है किसी भी ट्राइंगल के साथ. मीन्स T2 इज नॉट सिमिलर टू एनी ऑफ द triangle. Now coming to the next question. Show that the relation defined in the set A of all polygons have same P1 and P2 have the same number of sides. वही relation आएंगे जो जिनके number of sides, वही relation set में polygons आएंगे जिनके number of sides same है. Now polygons, this closed figure made up of all the line segments. So पहला I have to equivalence में first case I have to check whether the relation is reflexive or not. अब तक तो हमको बहुत clear हो गया होगा. If AA belongs to R, then the relation is reflexive. चलिए पहले we are going to check for P1. Clearly same number of sides होंगी. Number of sides in P1 is equal to number of sides in P1. Change तो नहीं होने वाली. So P1 will belong to R. R से belong करेंगे. That's why this relation is reflexive. Next relation, case 2. अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, so BA should also belong to R to make this relation reflexive, symmetric. तो BA R को belong करना चाहिए. Now, first let us say that P1, P2 belongs to R. ये हम कह देते हैं, this is given, ये relation set को belong कर रहे हैं. मतलब number of sides in P1 will be equal to number of sides in P2. P1 की P2 के साथ number of sides equal है. Clearly P2 will also P2 P1 will also belong to R because ये fact तो change नहीं होने वाला because P2 का भी number of sides will be equal to P1. So this relation is symmetric. ये symmetric है. Let us check whether the relation is transitive or not. अगर ए बी आप आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी आर को बिलोंग कर रहा है, सो ए सी शुड ऑल्सो, ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए. ए सी भी आर को बिलोंग करना चाहिए to make the case transitive, this relation transitive. Now, if P1, P2 belongs to R, means number of sides of P1 equal to number of sides of P2. ये fact given है. Now P2, P3 also belongs to R, that is number of sides of P2 will be equal to number of sides of
P3. So clearly हम कह सकते हैं P1 और P3 में भी सेम साइड्स होंगी. So P1, P3 will belong to R. Relation set को P1, P3 R को belong करेगा. That's why this relation is transitive. ये transitive है. Because this is reflexive, ये reflexive भी है, symmetric भी है, और transitive भी है. That's why relation is equivalence relation. Now, in the second part of the question, what I have to find the set of all elements in A related to right angle triangle T with sides 3, 4, 5. अब I have to look for A, ऐसा A set ढूंढना है जिसमें all the elements related to right angle triangle T with side 3, 4, 5. Now, T has number of sides equal to 3. T की number of sides 3 है. तो A set में all those polygons will come, P3 will come, all those polygons will come which have side 3. So basically A is the set of all triangles. सभी triangles की side 3 होती है, number of sides 3 होती हैं, तो सारे triangles will be related to this triangle T and they will come in the set A. So I hope this part of the question is clear. Coming to the next question. Let L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as L1, L2. L1 is parallel to L2. Show that R is an equivalence relation. Now case 1, I have to check whether the relation is reflexive or not. So if L1 will belong to R, L1 R को belong करेगा क्योंकि L1 is parallel to L1. हर लाइन अपने आप से पैरेलल होती है कि स्लोप्स इक्वल होती हैं, तो तभी वो आपस में relate करेंगे. That's why L1 will belong to relation set. So this relation is reflexive. Now case 2 is symmetric. I have to check whether the relation is symmetric or not. L1, L2 belongs to R. मतलब कि L1 is parallel to L2. Clearly L2 भी L1 के parallel होगा. L2 भी L1 के parallel होगा. So L2, L1 will also belong to R. So that's why this relation is symmetric. This relation is symmetric. Case 3. Transitive. L1, L2 belongs to R. This is given. ये हमको given है. Means L1 is parallel to L2. L2, L3 belongs to R. This is also given. Means L2 parallel to L3 है. So clearly from 1 and 2,
L1 is parallel to L3. 1 और 2 से क्या क्लियर है कि L1 L3 के पैरेलल है. So L1 L3 will belong to R. That's why this relation is transitive. ये relation transitive है. Because relation is reflexive, symmetric and transitive, that's why relation is equivalence relation. बिकॉज ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है, इसलिए ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है. नाउ आई हैव टू फाइंड सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, सेट ऑफ ऑल लाइन्स रिलेटेड टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 4. नाउ हमको all the lines, I have to find a set which are related to all the lines related to line y is equal to 2x plus 4. I have to look for a set जो इस line से related है. Clearly, if you remember straight lines in your class 11, उसमें parallel lines की क्या condition होती थी कि उनकी slopes equal होती थी. पैरेलल लाइंस की स्लोप्स इक्वल होती थी. तो स्लोप ऑफ गिवन लाइन इज 2. इफ यू रिमेंबर y इज इक्वल टू mx प्लस c, ये हमारी जनरल इक्वेशन होती थी एंड m इज द स्लोप ऑफ द लाइन. हियर m इज 2, तो स्लोप ऑफ द गिवन लाइन इज 2. तो a is the set of all lines, her line which have slope equal to 2. हर लाइन जिसका स्लोप इक्वल है 2 के, वो इस गिवन लाइन के पैरेलल होंगी, इसके पैरेलल होंगी. So that will come in set A. All those lines having slope 2 will be parallel to the given line. So they will come in the set A, which is the required set of the lines related to the line y is equal to 2x plus 4. Now coming to the next question. Let R be the relation 1, 2, 3, 4. The multiple choice question where given by R is equal to 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 2, 3, 2. मैं relation set लिख देती हूँ. 1, 2, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 3, 3, 3, 3, 2. Now, is this reflexive? Is this relation reflexive? 1, 1 is belonging to R, 2, 2 is belonging to R, 3, 3 is belonging to R, 4, 4 is belonging to R. Clearly reflexive तो है. Let me check whether the relation is symmetric or not. 1, 2 belongs to R, but 2, 1 R में नहीं है. 2, 1 is not belonging to R, so it is not symmetric. So पहला option हम cancel कर देंगे. Now I have to check for transitive. पहला 1, 2 R को belong कर रहा है, 2, 2 R को belong कर रहा है, तो 1, 2 R को belong कर रहा है. Now next if now next I'll check 4, 4 1, 3 belong कर रहा है, 3, 3 belong कर रहा है, तो 1, 3 भी R को belong करेगा. 1, 3 R को belong कर रहा है. देखिए डबलेट मोस्टली ट्रांजिटिव रिलेशंस को, ट्रांजिटिविटी को सेटिस्फाई करता है. 1, 3 R को belong कर रहा है, 3, 2 R को belong कर रहा है, तो डेफिनेटली 1, 2 भी R को
बिलोंग कर रहा है, सो ये आर को बिलोंग कर रहा है. So definitely this relation is reflexive and transitive but not symmetric. So B option is the correct option in this case. B correct option है. Coming to the next question. A is equal to B minus 2 हमारा relations in the set natural numbers to natural numbers है. हमारा रिलेशन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर है, वेयर a इज इक्वल टू b माइनस 2 एंड b इज ग्रेटर देन 6. b 6 से ग्रेटर है, तो कौन सा इसको बिलोंग करेगा. नाउ b हैज टू बी ग्रेटर देन 6, सो इन दिस केस b इज ग्रेटर देन 6, b इज ग्रेटर देन 6, b इज ग्रेटर देन 6. सो ये तो पहले ही कैंसिल हो गया. a इज इक्वल टू b माइनस 2. a b माइनस 2 से है, अगर b 8 है तो a इज गोइंग टू बी 6. so 6 8 शुड बिलोंग टू r बिकॉज आपका कंडीशन क्या है, a इज इक्वल टू b माइनस 2. तो b मैंने इन दोनों केसेस में 8 था, आई पुट b इक्वल टू 8, a 6 आ रहा है, तो ये वाला तो ऑप्शन नहीं है. दिस इज बिलोंगिंग टू आर रिलेशन, ओनली वन ऑप्शन आउट ऑफ ऑल दीज is correct, so we are going to choose C option. After now the exercise 1.1 is over. Now I am going to write certain bullet points. मैं कुछ bullet points लिखूंगी related to relations. Exercise 1.1. These bullet points will help you in your 1 marker section. 1 mark में बहुत help करेगा. पहला, number of relations from set A to set B, where the number of elements in A is m and number of elements in B is equal to n, is equal to 2 raised to power mn. Second bullet point, number of relations defined in set A, means A to A relation, is going to be equal to, where cardinality of A is n. अगर A में n elements हैं तो number of relations defined in set A is going to be equal to 2 raised to power n square. Third, number of identity relation is always 1. Identity relation unique होता है, where cardinality of A is n. चाहे n elements हो तब भी identity relation 1 होता है. Number of reflexive relations. Two raised to power n square minus n, where number of elements in A is equal to n. Number of symmetric relations is equal to 2 raised to power n square plus n by 2, where number of elements, the cardinality of A is n. Now, number of relations which are reflexive and symmetric both, जो reflexive भी हैं और symmetric भी हैं.
is equal to 2n square minus n by 2. Now, the next bullet point is, smallest equivalence relation. Smallest equivalence relation. अगर मैं आपको कहूँ कि मेरा A is, that is always equal to identity relation. सबसे छोटा equivalence relation identity relation होता है. जैसे suppose if I say that A is the set containing 1, 2, 3. So if I give you one relation having 1, 1, 2, 2, 3, 3 as the ordered pair, so this is going to be the smallest equivalence relation. Smallest equivalence relation हमेशा identity relation होता है, because this is the identity relation. Next, largest equivalence relation is always the Cartesian product. Last bullet point, largest equivalence relation defined in the set A will always be going to be the Cartesian product of A to A. With this exercise is over. The next concept will be functions. Thank you for watching.